Namaste ji, namaste. One very frequent MCQ of the DU LLB and CLAT is, and generally all law entrances, is that which writ is exempt from Mr. Res Judicata. So we'll discuss this in detail. So you need not write all details for DU LLB and CLAT. For LLM and judiciary, it's a good revision. So res judicata का basic जो funda है, that is degree of finality. That means the basic principle is that there should be degree of finality attached to a decision of the court. Now why? Why is it in the public interest that there be a degree of finality attached to the court? For example, you buy an iPhone from Amazon, and Amazon and you fight over, let us say, the iPhone malfunctioning. So if a court decides in your favor, for example, it says, so that court, if it is competent, वो फैसला हो गया. Now you can go to a lower court, जहाँ पे फैसला दिया होगा, you can appeal it. Then you can appeal it to Supreme Court, and then Supreme Court के ऊपर तो कोई है नहीं. But that फैसला is pretty much final. You are not going to fight over the same issue, that is the same cause of action between the same parties again. So res is always a thing. Legal maxims के वीडियो में बताया हुआ, res is always a thing. Judicata is हो गया ना, हो गया, हमने बोल दिया मेरा फैसला क्या है. आप इसको जाके अपील कर सकते हैं, बट फ्रेश मैटर यहाँ पे लगाओगे तो इट विल बी बार्ड बाय well res judicata. So a res, that means a thing is already been decided, we won't fight over it again because there is degree of finality attached to the decision of the court. तो यहाँ पे एक बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, appeal is a separate story altogether. You can appeal, guess what, the decision, but you're not fighting again, are you? You're not telling them कि अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने फिर फ़ोन ख़रीदा था और पूरी कहानी आप रिपीट नहीं करने वाले हैं. You are going to appeal the decision of the judge that was given by the lower court, then go to the higher court, then go to the Supreme Court. But you're not going to basically file a fresh case again once the decision has been given, because it will be barred by res judicata. Where is it given explicitly in section 11 of the CPC, रटने के लिए, but not for the DU LLB CLAT. You can ignore this detail. Otherwise, for other guys, section 11 CPC. Now the question that comes is which writ is exempt. So let us come to our writs. This is, well, what is it? QW is quo warranto. Now should be the stage where you should be having these names on your fingertips. C is certiorari, M is mandamus, P is probation, and HC is not the High Court but the habeas corpus. Now let us say with an example, अब फंडा रटने के लिए तो ठीक है कि जी habeas corpus is exempt, but why? Like Jyotsna messaged me the other day about this thing and I had already planned this video. So now quo warranto में क्या होता है जी? अगर आपको नहीं मालूम है, you better get your polity section sorted out because the exam is very near. Now in quo warranto में आप कोर्ट के पास गए रिट लगवाने और बोला कि ये बताओ कि ये आदमी के पास ये ऑफिस कैसे है, सरकारी ऑफिस के कागज़ दिखाए ये आदमी. एक बार फैसला हो गया, आप दोबारा कोर्ट जा सकते हैं क्या कि दोबारा दिखाओ, इसको बोलो दोबारा दिखाया आकर कागज़, भैया कोर्ट ने फैसला दे दिया ना. सो इट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. वेल, एंड देन वी कम टू रेस जुडिकाटा को हम सर्शियरी में अप्लाई करते हैं. सर्शियरी में आपने लोअर कोर्ट की प्लीडिंग्स या लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मंगा लिया सुप्रीम कोर्ट ने या हायर कोर्ट ने, और उनको कहा कि जी हम इसको सर्टिफाई करेंगे. तो उसमें एक बार फैसला हो गया तो दोबारा आप फिर से रिट लगा लेंगे? नहीं, barred by res judicata. Then we come to mandamus, without a discussion. No, एक बार कमांड दे दिया कोर्ट ने, हो गया ना, there is a degree of finality attached to it. Then we come to prohibition. Prohibition is रुको. Mandamus is we command you. Prohibition है रुक जाओ, हम बोल रहे हैं ना रुको, we are the higher authorities. अब उसके अंदर एक बार कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब आप दोबारा रिट लगाइएगा क्या? नहीं, it will be barred by res judicata. It's already been decided that prohibition, मैंने prohibition कर तो दी या मैंने ये decide किया कि मैं prohibition नहीं करूँगा, decided, barred under res judicata. But now we come to habeas corpus. ये महाराज थोड़े से special हैं, maybe because it resembles the name of a court. Anyway, so high court, sorry, habeas corpus. So habeas corpus का जो main जो फंडा है, that the civil actions and civil proceedings, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, they do not apply to illegal detention. Now the principle of res judicata is primarily for civil action and civil proceedings, or the principle of constructive res judicata rather. So illegal detention जो है, ये केस exactly डिटेल हुआ था
नाम है अब लालू भाई है, लल्लू भाई है, मुझे मालूम नहीं, लल्लू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस यूनिवर्सिटी 1980 का केस है. जुडिशरी वाले मेक अ नोट एंड lawyers and LLM people make a note, critical case law on this, because in this case law was it explicitly detailed कि ये habeas corpus is exempt from res judicata. But why? Because illegal detention isn't exactly falling under the category of civil action and civil proceedings. Because होता क्या है कि इसके अंदर थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं, इस केस के अंदर पटेल भाई साहब के अंदर, कि पटेल भाई साहब को गुजरात स्टेट ने एक स्मगलिंग के केस में डिटेन कर लिया. तो इन्होंने रेट लगाई, तो कोर्ट ने, वो जो भी लोअर कोर्ट या लोअर अथॉरिटी होगी, उन्होंने कहा कि हाँ भैया ठीक है, तुम्हें ठीक डिटेन किया. सो ही वेंट टू हायर कोर्ट अगेन. तो हायर कोर्ट में स्टेट ने कह दिया, क्योंकि स्टेट ही लड़ेगा ना सामने से, कि महाराज ये तो इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, ये आदमी दोबारा कैसे आ गया आपके पास? एक बार हमने फैसला दिया हुआ है ना, नीचे वाली अथॉरिटी ने दिया हुआ है ये फैसला कि भाई साहब ये तो महाराज जी जो हैं इन डिटेन हो गए, ये ठीक है, आप ही ने तो प्रूव किया है. तो कोर्ट ने इसमें समझाया कि देखो इलीगल डिटेंशन में क्या हुआ कि जी पहली बार अगर ये कोई फैक्ट प्रोड्यूस करना भूल गए, या इन्होंने अपनी कोई गलती कर दी, या इन्होंने प्लीडिंग ठीक से नहीं करी, या इनका वकील थोड़ा सा उतना समझदार नहीं था जो स्मार्टली खेलता, तो क्या अब ये उस गलती भुगत के जेल में पड़े रहेंगे क्या, या इनकी डिटेंशन होगी नहीं? सो बलवा को पर्सनल फ्रीडम पे एक एमसीक्यू आता है. बलवा को पर्सनल फ्रीडम, अगेन habeas corpus, which writ बलवा को पर्सनल फ्रीडम, habeas corpus. So our constitution emphasizes the most on personal freedom and liberty. So therefore the writ that is related to this is habeas corpus. तो इस केस में यही बताया गया कि you can, it is not barred by res judicata because your detention, your liberty, your personal freedom is very, very, very important to the Indian Constitution. And thus, if, for example, it has been decided that your detention is all right, you can again file a fresh writ and then come to the court with some new grounds or something that was left out from the first writ, or if you felt that the court was wrong. So, habeas corpus exempted here from res judicata. Law gets complex, right? DULLB CLAT, no need to write down this case law. Nothing to do, no civil action, no civil proceedings, no illegal detention, nothing of that sort is going to come in your exam. This is basically, we have entered into law school territory, and that is why habeas corpus is exempt from res judicata. QED, right? Quite easily done. Hopefully it was of some use to you. Thank you so much for watching. Take care and all the best, and get ready for all of this in law school. And even if you want to become a judge tomorrow, all these we need on your fingertips. Right. Thank you. Take care. Bye-bye.